we are the Nasarapur Spiritual Life Center. It has been registered with the Charity Commissioner's Office. We had a lot of asbestos sheets, cement sheets. So we had been advised that these are banned now and we need to change. इतने बड़े प्रेमाइसेस में और इतने कम पैसों में चलाना बहुत मुश्किल था। We found that when we just replaced it with the tin sheets, तो उसके अंदर जब हम बैठते थे तो काफी गर्म होता था। it was very hot and people were not able to enjoy their meals or sit in comfort. रात को सो नहीं पाते थे। 3-4 जगह गए। एक ऐसा एक मटेरियल लगता है जिसके जरिए उसकी हीट वो एब्जॉर्व कर लेता है और वो नीचे हीट नहीं आती है, हमें ठंडक आती है। कि हमें इस चीज की खुशी है कि अभी कोई भी हमारे जो उस क्षेत्र में आएगा रहने के लिए तो उसको कोई तरह का ऐसा कोई हार्मफुल कोई ऐसा रिएक्शन या कुछ ऐसा किसी तरह का होगा नहीं। We found that the entire atmosphere of geometric was very warm and helpful kind of a nature. Comfort to work with geometric was high amongst most of us who visited both the places. We are quite happy with the way the entire project has come around. So we are the Nasarapur Spiritual Life Center. We are located about 40 kilometers away from Pune. This is a conference and retreat center where we conduct camps for families, for churches, for various church-related activities. It is a religious institute. It has been registered with the Charity Commissioner's Office and it has been run by a board of trustees who are elected in the annual general body meeting every 3 years. With me now today is first to my right, Reverend Amulik. He is the manager and looking after the day-to-day operations of the center. I am Niranjan Swarge. I am the treasurer of this center. Next to me is Mr. Julius Krupanand. He is the trustee of this center. And adjacent to him is Mr. Anand Renukar, who is the chairman of the center. And adjacent to him is Mr. Suresh Bhalekar, who is the vice chairman, and next to him is Mr. Rajesh Jadhav, who is the trustee. So there are a couple of people who are not here, but generally we form the board of trustees who look after the management of the center and who look after the long-term interests also. You had a new project here. So वो प्रोजेक्ट किस रिगार्डिंग था, उसका पर्पस क्या था? So initially when we did a audit in our place, we had a lot of asbestos sheets, cement sheets. So we had been advised that these are banned now and we need to change. So with as soon as our budgets permitting, we started the project and started doing it stage wise. When we did our dining hall, which is one of the biggest areas, we found that when we just replaced it with the tin sheets, it was very hot and people were not able to enjoy their meals or sit in comfort. Therefore, when we thought that we will do the next projects, we thought that we need to have some kind of a different solution. So we raked a lot of thoughts, everybody contributed to this and we had various options at hand. So after considering all the options, we thought that we need to go for a insulated sheet. This was a couple of years ago, but since the costs were relatively high compared to the tin sheets, we had to back shelf our project for about 2 years. And when we had the funds, we started actively scouting for these kind of tin sheets. Okay. So you had a regular sheet in your facility. You have used it. So compared to the thermal insulated sheet, what was your experience with the thermal insulated sheet after installing the thermal insulated sheet and जो नॉर्मल रूफिंग यूज किया है उसके कंसीडरेशन? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हमारे जो केंद्र का पूरा हमारे ट्रेजरर साहब ने इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये पूना की हमारी तीसरी ऐसी संस्था है। जब पूना शहर था
जब यहाँ पर हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई, तो ये थर्ड हमारी सोसाइटी ऐसी रजिस्टर होने वाली, इतनी जूनी संस्था। ये 85 ईयर्स से इसी तरह यहाँ पर सब स्ट्रक्चर थे और उसके ऊपर सब सीमेंट शीट थी। तो जब जिस तरह ट्रेजर साहब ने बताया कि जब यहाँ पर स्ट्रक्चर को ऑडिट किया गया, ऑडिट में जब पता चला कि बाबा ये पतरे बैंड है सीमेंट शीट के, इससे कोई बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो उसके बाद में जो हमारे केंद्र के जितने भी डायरेक्टर थे, जितने भी ट्रस्टी थे, मैनेजमेंट के मेंबर्स थे, वो सब लोगों ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हमें कोई जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें फंड्स की जरूरत थी। उसके बारे में हमने हमारी कमेटी में काफी डिस्कस किया। हमारी कमेटी कोई बहुत बड़ी, हमारे पास ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, मगर हमने उस चीज को किस तरह से लोगों से फंड को जनरेट किया और उसके बाद में हमने कुछ प्लानिंग किया। तो प्लानिंग में सबसे बड़ा हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो रोल था आप तक पहुंचने का, आपकी कंपनी तक पहुंचने का, इसमें हमारे ट्रेजरर का बहुत बड़ा रोल था। ट्रेजरर और हमारे जो जादव साहब है, ये भी ट्रस्टी है हमारे जादव साहब, और हमारे जो चेयरमैन सर है रेणुकर सर, ये, और एक सेक्रेटरी है राजेश यादव। तो ये सब लोगों ने मिलके आप तक पहुंचने का इन्होंने काफी प्रयास किया, जिसके जरिए हम 3-4 जगह पर गए। हमारे जो ट्रस्टीज है और कमेटी मेंबर्स है 3-4 जगह गए, लेकिन जब फाइनली जब हमने डिस्कस किया कि हमें आपके जियोमेट्रिक के साथ में काम करने में थोड़ा सा ऐसा कंफर्ट लगा कि हम चलो इसको बात करेंगे रेट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर, हर चीज के ऊपर हमने तय किया। उसके बाद में हमने तय किया कि बाबा ये इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस काम को। जब इस काम के लिए हमने शुरुआत करने के लिए हमने जब पहला किया तो उन्होंने हमें एक टाइम बार दिया कि हम 1 महीने में आपका काम करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने जो हमारे जो सीमेंट शीट थी वो सभी सीमेंट शीट को निकाल करके हमने, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था सीमेंट शीट में, जो हमारा यहाँ पर जो पूरा वातावरण है, आजू बाजू सब बाजू से झाड़ है, तो झाड़ की वजह से क्या होता था उसके ऊपर पत्ते वगैरह जमते थे, तो काफी मतलब तकलीफ होती थी। उधर ऊपर एक राड़ा और कीचड़ जैसा बन जाता था। तो अब जैसा जब ये हम लोग अपना जीआई शीट लगा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक थोड़ा सा स्लोप भी है तो इतना रुकेगा नहीं, कचरा जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा कंपेयर किया, जो हिसाब से हमने जब पूरा देखा, जब हमने पहले जो हमारे डाइनिंग हॉल में टीन शीट लगाया था, तो उसके अंदर जब हम बैठते थे तो काफी गर्म होता था, तो हमें उसका कुछ ऑल्टरनेट देखना था जो बेटर फील हो सके हमारे लोगों को। तो हमारे बाजू में जो बंगला है वो काफी बड़ा एरिया है, 7000 फुट का नियर अबाउट एरिया है। तो उसके अंदर हमको ऐसा लगा कि जो हमारे लोग रहते थे रात को सो नहीं पाते थे, तो इसका हम क्या करेंगे, इतने बड़े प्रेमाइसेस में और इतने कम पैसों में चलाना बहुत मुश्किल था। तो हमने सोचा कि बाबा हम लोग बैठ के इस चीज का कुछ अच्छा एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वहां पर जो हिसाब से जब हमारी कंपनी से बात हुई जियोमेट्रिक से, तो वहां पर उन्होंने बताया कि हमारे जो टीन के नीचे, जो जीआई शीट के नीचे एक ऐसा एक मटेरियल लगता है जिसके जरिए उसकी हीट वो एब्जॉर्व कर लेता है और वो नीचे हीट नहीं आती है, हमें ठंडक आती है। तो हमने देखा है अभी जैसे अभी लगा है, तो हमने उस चीज को हमने देखा हमारे डाइनिंग हॉल और हमारे बंगले में कितना फर्क है। तो काफी फर्क आता है उसमें, उस चीज के अंदर। लेकिन ये चीज आगे तक इसी तरह हमें अगर देता है, ठंडक देती है और उस चीज के बारे में, तो काफी अच्छी चीज है। इसके बारे में हमारे जो चारों लोगों ने काफी मेहनत किया है, और यहाँ पर फिर जो आपके जो मेंटेनेंस करने के लिए जो आए थे, जिन्होंने ये सब सारा चेंज किया है, और उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया। जो टाइम बार दिया उन्होंने, उस टाइम बार के अंदर उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया है। तो अभी तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि थोड़ा इसमें थोड़ा फर्क है सीमेंट शीट के अंदर। और सबसे पहले जो बात यह है कि हमें इस चीज की खुशी है कि अभी कोई भी हमारे जो उस क्षेत्र में आएगा रहने के लिए, तो उसको कोई तरह का ऐसा कोई हार्मफुल कोई ऐसा रिएक्शन या कुछ ऐसा किसी तरह का होगा नहीं। तो यही सारी चीजों की वजह से हमने उस चीज को परमिट किया हमारे कमेटी मेंबर्स ने, कि हम लोग ये इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे इस चीज के बारे में। This is the chapel where we conduct our worship services and also any lectures or any devotions that have to be taken. These are done in this chapel. This is immediately on the entry. So to the right now is the initial project which we did, where we changed the sheets
You can see that we have put those rotators on top, exhausts, but in spite of that, we were not getting the cooling which we wanted, and therefore we had to look for some different solutions. This is the dining hall, the entry to the dining hall. This is the manager's quarters. Now this is the place where we have now installed those insulated sheets. It is not entirely everywhere, but it is only on the basic roof. This is a two-story building. The lower part is very cool and comfortable, but the top part is to always be heated up. The rooms on the top were quite uncomfortable for people to stay, and therefore we had to look for some alternate solution to bring more comfort to their stay. These are the rooms here. We have 10 rooms on top. Totally on the Yes, totally. We have installed totally. In this front veranda areas, we have put the non-insulated GI sheets. So here also in the veranda, we have the normal GI sheets. So this is the area where the smaller children, during when the elders are involved in the devotions and worships, small children are conducting their programs here and their classes here. So this small enclosed area we have for this. So this is also a place which we have here. Here also we have normal GI sheets, which we may over a period of time again change to insulated sheets. So this is one project that we can look for in the future. This is a double-storied building, and it can accommodate, I think, about 30. Okay, there is a downstairs also. Yes. You can go from around downstairs. From here, you go on the top. So we have cleared everything actually, and आखिर में अगर आपको कुछ बोलना हो सर, ट्रेजर सर, आपको अगर कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो. So when we started working with geometric, we found that the entire atmosphere of geometric was very warm and helpful kind of a nature. We discussed with a number of companies, but we found that the approach was quite business-like actually, and the comfort level of interacting with the people was not so much as we got with geometric. Therefore, though the prices were not much difference, the comfort to work with geometric was high amongst most of us who visited both the places. Mr. Bhosle especially, I would like to say, had helped us a lot in everything. He guided us in a number of things, what need to be done. The execution was not very smooth. There were a lot of issues that came up while doing the work, but it was a lot of proactive efforts taken by Mr. Bhosle and his team, who came time and again here, made solutions,
and we ensured that the work is completed. They were flexible in whatever way we wanted them to be, and we are quite happy with the way the entire project has come around. Thank you so much. Thank you all for giving us a valuable feedback, and I hope we Geometric Steels and team hopes that the product you are using will be effective, and we can be connected for future projects and future relationships as well. Thank you. Thank you, sir. Yes, it's a pleasure.